Hello everyone, I hope you all are doing well. So today in this video we will discuss a very important topic of class 12th physics from the chapter Dual Nature of Radiation and Matter. The topic name is your Einstein photoelectric equation. Einstein for the derivation of photoelectric equation uses Planck's quantum theory. What Planck's quantum theory tells us? According to Planck's quantum theory, light radiation consists of a tiny packets of energy, and these packets of energy is known as quanta, or you even can say photon. The energy of quanta or photon is given by the relation E will equal to h mu. Energy will equal to Planck's constant into my frequency. So the energy of photon or quanta is given by this equation. Energy will equal to h mu. Einstein considers the Planck's quantum theory and said he assumed that the one photon on striking with metal ejects only one electron. That means one photon on striking with metal ejects only one electron. एक फोटोन जब मेटल के साथ स्ट्राइक करता है उसके साथ इंटरेक्ट करता है तो एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ही क्या करता है एमिट करता है द एनर्जी ऑफ फोटोन इज स्पेंट इन टू वेज लेट्स सी द वेज Basically, he said that the energy of photon is spent in two ways. First, one part of the energy of photon is used in the emission of electron from the metal surface, which is equal to phi naught. That means क्या कह रहे हैं कि कुछ part energy का उन इलेक्ट्रॉन को emit करने में यूज हो जाता है उस मेटल सरफेस से. Another, the rest of energy is spent to give the maximum kinetic energy to the emitted photoelectron. जो टोटल आपकी एनर्जी थी आइंस्टाइन ने बोला वो दो में डिवाइड होगी. फर्स्ट पार्ट क्या करता है उन फोटो इलेक्ट्रॉन को आपकी सरफेस है मेटल के सरफेस से क्या करता है इजेक्ट आउट करता है एमिट आउट करता है. बाकी जो एनर्जी आपकी बचती है रेस्ट एनर्जी इज यूज टू गिव द काइनेटिक एनर्जी टू दोस इलेक्ट्रॉन. सो यू हैव द इक्वेशन एच म्यू विल इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम. फ्रॉम हियर के मैक्सिमम विल इक्वल टू एच म्यू माइनस में फाई नॉट. So maximum kinetic energy for electron is given by the formula half mv maximum whole square, which will equal to h mu minus में few naught. This equation is called Einstein photoelectric equation. Now, if we take the case that if the photon is only threshold frequency means जो आप उसके ऊपर फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं उसके पास सिर्फ इतनी ही एनर्जी है. ठीक है, बिकॉज वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू. तो उसके पास इतनी ही थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है कि वो उसको डिटैच कर सकता है. तो उसके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है तो वो सारी एनर्जी किस में चली जाएगी वर्क फंक्शन करने में. दैट मीन्स द टोटल एनर्जी एच म्यू नॉट. अब यहाँ म्यू नॉट क्यों लिख रहे हैं यही हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो उसकी क्या है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है. वो क्या काम करेगी सिर्फ उसको इजेक्ट आउट करने का. कहाँ से मेटल सरफेस से. सो हियर इन दिस केस यू हैव एच म्यू नॉट विल इक्वल टू फाई नॉट. ऑन रिप्लेसिंग दिस फाई नॉट बाय एच म्यू नॉट यू हैव द इक्वेशन हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वेयर विल इक्वल टू एच म्यू माइनस में एच म्यू नॉट. ऑन टेकिंग एच कॉमन you have mu minus mu naught. So kinetic energy maximum you have the relation h mu minus mu naught. And we all know that maximum kinetic energy कब होती है on you have the maximum kinetic energy by this formula also. ev naught will equal to maximum kinetic energy. After obtaining Einstein photoelectric equation, we will see the explanation of laws of photoelectric emission given by Einstein. So first is since one photon ejects one electron from a metal surface, hence the number of photoelectron emitted per second depend upon the number of photons falling per second, which is turn depend upon intensity of incident light, विच इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है आपका कि जो आपके नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं. नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी. हेयर इन दिस केस ऑल्सो वी ऑब्टेन दिस. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन भी आपको यही मिल रहा है कि वन फोटोन इजेक्ट्स वन फोटो इलेक्ट्रॉन. मीन्स एक फोटोन आपका एक फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा और होगा क्या जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड
पर सेकेंड। बेसिकली अगर हम देखें, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड है वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड कर रहे हैं आपके नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड, एंड विच इज टर्न डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मीन्स इन्वर्स करिए इस प्रोसेस का, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट आपकी किस पर डिपेंड कर रही है? डायरेक्टली अगर आप देखते हैं फोटोन के केस को रिमूव करके, इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। एज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन goes on increasing, because of you are increasing the intensity of incident light. So second we have, if mu is less than mu naught, means frequency of incident light is less than the threshold frequency, then if you put these value in the equation, देखिए अगर आप mu की वैल्यू को लेस पुट करते हैं एज कम्पेयर टू म्यू नॉट, यू विल हैव नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी विच इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा केस पॉसिबल ही नहीं है, हैंस फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट डज नॉट टेक प्लेस for the incident radiation below threshold frequency. This is the explanation given by the Einstein for the photoelectric effect. Now the third, if mu is greater than mu naught, अगर आप देखिए frequency of incident radiation is greater than the threshold frequency, then definitely the process of emission of electrons are carried out, the photoelectric effect will goes on here. The kinetic energy is directly proportional to frequency. Above the threshold frequency of maximum kinetic energy of electron depend upon frequency of incident radiation, which is the third law of photoelectric effect. So the fourth law, it is just like a collision between incident photon and electron of the metal. Means this is an instantaneous process. Of course this is an instantaneous process, there is no time lag. That's why this is your fourth law of photoelectric effect: absorption of energy of photon and emission of electron. Now we will discuss a very important little bit topic, which is your photon. Einstein considered the whole effect by assuming the Planck's quantum theory, which assumes that light consists of a small energy packet known as photon. So let's see what is photon, and we will see the properties of photon. So firstly, particle nature of light, the photon. According to Einstein, light consists of a particle associated with definite amount of energy and momentum. आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी होती थी, कि वो जो फोटोन कंसिडर कर रहे हैं, बट उस फोटोन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि वो फोटोन के पास क्या होता है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और मोमेंटम होती है। हाँ जी, इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं हम इंटरेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट, एन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड ऑफ पार्टिकल लाइक फोटोन। जब भी आपका कहते हैं इंटरेक्शन होता है किसका, रेडिएशन का मैटर के साथ, तो वो रेडिएशन बिहेव करती है जैसे कि वो रेडिएशन पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। कौन से पार्टिकल्स से? फोटोन से। Energy of photon is given by the relation E will equal to h mu, which is your Planck's relation. So even as we all know that mu will equal to c by lambda, so we have another relation hc divided by lambda. We know that when a particle moves with a velocity v comparable with the velocity of light, here we are discussing about the properties of photon. तो यहाँ properties of photon में photon के केस के लिए डिस्कस करते हैं कि अगर पार्टिकल जो फोटोन है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अगर वो मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ, कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ, तो उसका मास क्या होने वाला है, विच इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, एम विल इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्र अपॉन सी स्क्र। ये मतलब जनरल इक्वेशन होती है। यहाँ पे आप पुट करिए, अगर फोटोन के केस में आप वी विल इक्वल टू सी पुट करते हैं, देन यू हैव एम नॉट विल इक्वल टू 0, which gives the relation that the rest mass of photon is 0. Next, photons are not deflected by electric and magnetic field, which tells us that photons are electrically neutral. So this is all about the photon, the Einstein explanation of photoelectric effect by using Planck's quantum theory.